students, how are you? I am fine. Myself Obik Roy from the Mathematics Icon channel, your mathematics teacher. Okay, so this lecture is I think it is going to be very interesting for the 12th classes as well. Then I think the tangent normal chapter is going on. This subchapter is going on from the application of differentiation chapter, and this lecture is very important for the board candidates. Okay, so I think as a 12th candidate you should solve this type of questions for the better marks. That means so that you can you can get that kind of marks and that kind of high marks in this mathematics subject as well. So that's why I am trying my best to give you the too much convenience and the too much support from my side, okay, so that you can face the various hurdles in your life and just so that you can confront various problems and various things and various types of solutions, various types of questions from the mathematics subject as well. And that's why just I am trying to provide each and every type of question solutions, and from my side, from the different books and from the different sources. And those who have the idea, those who have the aim about the board exams, and those who have not the aim to face these JEE main and advanced exams, then the JEE main and advanced classes is going on, as you all know. So that I think you shouldn't view the lectures of the JEE main and advanced classes. Just you should view these lectures, the regular classes as well. Those who are very important for the board exams. Okay, so let me solve the different questions from the tangent normal chapter. And before starting the lectures, before starting the solutions of the different questions, just let me tell you one thing, that if you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel for the better experience in English. And so that I think I am supposed to be very much confident and supposed to be motivated also. Okay, so just write the first question. Find the equation of the tangent and normal at the point T. Find the equation of the tangent and normal. Find the equation of tangent and normal at the point T on the curve x equals to a sine cube t, y equals to b cos cube t. That means this is the curve actually, and this curve is in the parametric form. So I think if you will be given the parametric form of equation, then how can you solve the dy by dx? I think in the differentiation chapter, parametric type of equations were solved. Different questions were solved. Okay, so I think this t is the parameter. Okay, just you can see at the point t is the parameter here. So dx by dt, dy by dt should be found, and after that, using the chain rule, dy by dx equals to dx by dt into dy by dt, just like that. dy by dx equals to dy by dt into dt by dx. Just using this chain rule, you can get the dy by dx value. Just after, actually that means if just you will get the dy by dx value, then dy by dx means what? The tangent slope, okay, of this curve. Okay, now here given curve x equals to a sine cube t, y equals to b cos cube t. So dx by dt equals to a 3 sine square t cos t, and dy by dt equals to b 3 cos square t and this minus sine t. So dx by dt equals to 3a sine square t cos t, and dy by dt equals to minus 3b cos square t into sine t. So after getting this dx by dt and dy by dt, only the one formation you have, and that is dy by dx, and I think this part needs to be found, because dy by dx in the tangent normal part, dy by dx absolutely that will be used for finding the tangent normal equation, I think. Okay, and that is the slope of the tangent. dy by dx equals to dy by dt into dt by dx.
So dy by dt means what? Minus 3b cos square t sin t by 3a sin square t cos t. 3 cancel, here cos t cancel, sin cancel. That means minus b by a cos t by sin t, and that is the dy by dx below. Now, one question may be arised in your mind: what will be the point of contact of this curve where the tangent touches the curve as well? Okay, here the point of contact will be, that means the x1 y1 value will be this. X1 means a sin cube t, y1 means b cos cube t, and that is the usefulness, and that is the actually main theme of this parametric form of equations. Parametric form means this x equals to something, y equals to something will be given, कुछ ना कुछ दिया जाएगा, जो x का वैल्यू होगा वही तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना. पॉइंट का कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? x का एक वैल्यू रहेगा, y का एक वैल्यू रहेगा, दोनों वैल्यू मिलके एक पॉइंट बनाएगा. यहाँ पर तो ये तो वैल्यूज ही है ना, x equals to this, y equals to this. ये तो नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, ये तो पैरामेट्रिक फॉर्म है. तो पैरामेट्रिक फॉर्म ही होता है दो पॉइंट, दैट मींस एक पॉइंट कोऑर्डिनेट, ये x ये y. ठीक है. सो दैट मींस x1 y1 के जगह हम लोग ये पुट कर सकते हैं. तो यहाँ पर तो जरूरत नहीं है, यहाँ पर तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये दोनों चीज यूज करके ही तो dy by dx निकाला है. तो ये ऑलरेडी दिस dy by dx was already found at the point of contact, so no need to use this point of contact again. Okay, now I think equation of tangent y minus y1 dy by dx x minus x1. So y minus y1 means what? This one, b cos cube t. Okay, and dy by dx means what? Minus b by a cos t by sin t. Okay, and x minus x1, that means a sin cube t. Okay, so now you can multiply diagonally, and then after that I think you will get the answer. So a sin t into y minus ab cos cube t sin t, then equals to minus b cos t into x minus plus ab sin cube t cos t. Okay, so this is the main structure of this tangent line. Now it's time to calculate this thing. Now it's time to make it simple. Okay, now try to make it simple as much as possible. Okay, so here a sin t into y, okay, and this part plus b cos t into x equals to ab sin cube t cos t plus ab cos cube t sin t. Okay, so x b cos t into x plus a sin t into y equals to ab sin t cos t common. If I take this common, then I think sin square t plus cos square t will be there, right? So b cos t into x plus a sin t into y equals to ab sin t cos t, और ये तो 1 हो जाता है. बस हो गए. This is the final equation of the tangent line. Similarly, you can find the normal line also. Normal line equation, only this dx, in place of dy by dx, you should use what? Minus dx by dy, but rest of the things will be same. Okay, so equation of the normal y minus y1. y1 means what? b cos cube t equals to minus dx by dy x minus x1, it means a sin cube t.
सो y माइनस बी कॉस क्यूब टी, जो भी dy बाई dx का वैल्यू मिला था उसको रिसिप्रोकल कर दो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर एक वैल्यू आएगा और ये तो सेम है, फिर पूरा मल्टीप्लाई करो करके ऐसा ही एक इक्वेशन मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर जस्ट ये पार्ट चेंज होगा, बाकी तो ऐसे भी सेम रहेगा ना। माइनस डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाल के रखा था शायद। ठीक है, तो वहां से डी एक्स बाई डी वाई देखो कितना होता है वैल्यू, सामने एक माइनस साइन है, माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल, जस्ट यू कैन कंप्लीट दिस आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। Can you complete this answer? Obviously you can complete. If you have any doubt regarding the solution, that you can ask me. Okay, find the equation of the tangent and normal to the curve. Find the equation of the tangent and normal to the curve. Find the equation of the tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve y equals to x minus 7 by x minus 3 x minus 2. Okay, at the point when it cuts x-axis, at the point when it cuts the x-axis, that means a curve equation will be given. A curve equation is given, you can see in the question, curve is given. You need to find the equation of the tangent and normal to this curve at the point of contact. It is not the parametric form of equation, so you need to find the point of contact here. Okay, but one link is given. What is the point of contact here? This point of contact obviously lying on x-axis. Okay, just you can see at the point when it cuts the x-axis, that means the point of contact obviously lying on the x-axis as well. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, दैट मीन्स व्हाट, उसमें वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, एज यू ऑल नो। ठीक है, अब अगर कार्व के ऊपर, अब कार्व पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कार्व के ऊपर भी तो लाई करेगा। ठीक है, अब कार्व के ऊपर वाई का वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर दूं, एक्स का वैल्यू मिलेगा वहां से, ऑब्वियसली मिलेगा। ठीक है, ट्राई करते हैं। गिवन कार y equals to x minus 7 by x minus 3 x minus 2. It is equation number 1. Okay, since point of contact lying on x axis, so y equals to 0. Y equals to 0. That is, अगर y equals to 0 होता है, that means 0 equals to x minus 7 by x minus 3 x minus 2. That means x equals to 7 आ रहा है. So point of contact यहाँ पर क्या आ रहा है, 7,0. Point of contact क्या मिल गया, 7,0. Now it's time to find dy by dx. Now from curve, अब कर्व के ऊपर जाओ, y x minus 3 x minus 2 equals to x minus 7. ठीक है, तो हम लोग ddx of y into x minus 3 x minus 2 equals to ddx of x minus 7 निकाल देते हैं। dy by dx तो निकालना है ना, तो सो d, अच्छा यहां पर u भी होगा, u भी, सो y into ddx of x minus 3 x minus 2
प्लस x माइनस 3 x माइनस 2 ddx ऑफ y इक्वल्स टू 1। तो y ddx ऑफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दैट मीन्स माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और ये हो जाता है dy बाई dx इक्वल्स टू 1। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां से देखो y ये हो जाएगा ट्वाइस x माइनस 5 और ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और dy बाई dx इक्वल्स टू 1। ओके, नाउ dy by dx equals to 1 minus twice x minus 5 into y by x square minus 5x plus 6। ठीक है, ठीक है ना, ये होता है आपका dy by dx का वैल्यू। सो एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है 7,0, dy by dx एट 7,0, तो y का वैल्यू 0 है ना, तो ये पार्ट तो पूरा 0 हो गया। 1 बाई 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 मीन्स 1 बाई 49 माइनस 35 प्लस 6। सो 55 माइनस 35 दैट मीन्स 1 बाई 20। 49 प्लस 6 मीन्स 55 और 35 दैट मीन्स 1 बाई 20 मिल गया आपको dy बाई dx का वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 7,0। सो आपको तो निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बस निकालिए y माइनस y1 dy बाई dx कौन सा पॉइंट है 7,0 पॉइंट में x माइनस x1। सो y माइनस y1 ये होता है 1 बाई 20, देखो 1 बाई 20 मिला है ना, और x माइनस x1 तो बस ओके 20y equals to x minus 7. That means x minus 20y minus 7 equals to 0. It is the equation of tangent. Similarly, you can find equation of the normal. Okay? Equation of normal. ये लिख लो, equation of the tangent pause करके ये लिख लो, ठीक है। So equation of normal क्या होगा, equation of normal सिर्फ ये पार्ट चेंज होगा, माइनस dx बाई dy एट 7,0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो दैट मीन्स यहां पर ये होगा माइनस 20x माइनस माइनस प्लस 140, तो बस क्या होगा 20x प्लस y माइनस 140 इक्वल्स टू 0। इट इज द नॉर्मल इक्वेशन, ये नॉर्मल है, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन भी मिल गया, नॉर्मल के इक्वेशन भी मिल गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ y इक्वल्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। कैलकुलेशन थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक भी हो जाए, ठीक है ना। कैलकुलेशन इट्स नॉट द मेन थिंग, द प्रोसेस इज द मेन थिंग। ओके, तो ऐसे बोर्ड में करते करते हो सकता है कि 3 की जगह 5 लिख लिया, 5 की जगह 6 लिख लिया, हो सकता है, ह्यूमन एरर तो हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग प्रोसेस देख लीजिएगा। ज्यादातर तो ऐसा मतलब होता नहीं है, ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, बट ज्यादा गर्मी हो जाए ना, बहुत गर्मी है, देखो दिमाग बीच बीच में काम नहीं करता, ठीक है, मिस्टेक हो सकता है, मैं भी पूछ सकता। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, find the equation of the tangent, find the equation of the tangent and normal। एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है, कार्व का डिफरेंट होगा। टू द कार्व y equals to x cube minus 1 and x minus 2 at the point when curve cuts the x axis। अरे सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो x axis को कट करता है, दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लाइंग ऑन
x-axis. So similarly, you can find the point of contact here by using y equals to 0 because the point of contact lying on x-axis. So x-axis के ऊपर lie करता है कोई भी point, that means उसका y coordinate तो 0 होगा. ये तो हम लोग श्योर हैं. ठीक है, यह तो हम लोग जानते हैं, जूनियर क्लासेस से ही जानते हैं. ठीक है, so given curve y equals to x cube minus 1 x minus 2. ठीक है, y equals to, इसको एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे और ऐसे लिखो, since point of contact lying on x-axis, so y equals to 0. That is 0 equals to x cube minus 1 और इधर x minus 2. बस यहां पर तो x का वैल्यू एक बार 2 मिला और x का वैल्यू एक बार 1 मिलेगा. दो वैल्यू. सो पॉइंट्स आर एक 2,0, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, एक 1,0. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहां पर दो है, 2,0 और 1,0. ठीक है, अब नाउ dy by dx भी कर लेते हैं. नाउ फ्रॉम कर्व dy by dx equals to ddx of x cube minus 1 x minus 2. So dy by dx equals to ddx of मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यों यू भी करें यहाँ पर x to the power 4 minus 2x cube minus x minus 1 plus 2. थोड़ा देख लेना कैलकुलेशन को, अगर गलती हो जाए तो करेक्शन कर लेना. 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ dy by dx तो निकल गया. अब दो पॉइंट है, दो पॉइंट है, एक बार 2,0 में निकालो, एक बार 1,0 में निकालो. नाउ dy by dx 2,0, तो दैट मीन्स 4 into 2 cube minus 6 into 2 square minus 1. So यहाँ पर dy by dx 2,0 832 minus 24 minus 1 25 7. तो ये होता है 2,0 में. एट 1,0 उसमें dy by dx कितना निकलता है देख लेते हैं. 1,0 that means 2 into 1 cube minus 6 into 1 minus 1. That means 2 minus 6 minus 1. That means minus 7, इधर minus 5. So tangent equation y minus y1 इस पॉइंट में निकाल लेते हैं. y minus y1 dy by dx at x minus x1. So that means 7x minus 14 equals to y. That means 7x minus y minus 14 equals to 0. ये है टेंजेंट इक्वेशन किस पॉइंट में? 2,0 पॉइंट में. So again at 1,0 y minus y1 और ये minus 5x minus x1, y minus 5x minus plus 5. That means 5x plus y minus 5 equals to 0. So that means ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन है for this particular points. Individually just we are finding the tangent equations at the different points. Okay, it may be possible that the point of contact, it may be different, it may be multiple. Okay, just if you are getting the multiple point of contacts, then obviously tangent will be multiples. Okay, and the normal will be different also. Okay, then find the equation of the tangent line to the curve. नॉर्मल का भी निकालना है. अगर नॉर्मल का जस्ट आपको ये चेंज करना है, ये पार्ट चेंज होगा, बाकी सब कैलकुलेशन तो सेम ही होगा, है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब जस्ट ओनली द कैलकुलेशन पार्ट, दैट्स व्हाई जस्ट वी आर जस्ट सॉल्विंग इट वेरी फास्ट. ओके, एवरी कैलकुलेशंस आर सेम एंड द सेम पैटर्न क्वेश्चंस. ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. Find
the equation of the tangent, find the equation of the tangent, find the equation of the tangent to the curve, y equals to root 5x minus 3 minus 2, which is parallel to 4x minus 2y plus 3 equals to 0. So given curve y equals to root 5x minus 3 minus 2. ठीक है? So ये इक्वेशन नंबर 1 देखिए रख सकते हो, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर एक काम कर सकते, यहाँ पर y क्लास 2 रूट 5x, ये रूट लेके कैलकुलेशन करना, इट इज क्वाइट different, quite difficult, no? So just you can use squaring on both sides. Then I think that will be the advanced structure. That will be the smart structure. Now you can find ddx of y plus 2 whole square and this 5x minus 3 and ddx. So that means 2 into y plus 2 into dy by dx, and it is 5, I think. Dx of 5x means 5. So dy by dx equals to 5 by twice y plus 4. Twice y plus 4. Now it's time to find the point of contact. Point of contact तो नहीं पता है. Let us assume. Let point of contact x1, y1. So dy by dx का वैल्यू at the point of contact क्या होगा? 5 by twice y1 plus 4. ठीक है? Now equation of, अच्छा यहाँ पर just you can see the question, which is parallel to the line. That means the tangent line, whatever the tangent line it is, just you need not to consider the tangent line equation. Only the slope of the tangent needs to be considered. Because if the tangent line is parallel to another line, that means what? What will be the relation between them? Their slopes will be equal. This will be the tangent slope, and this will be the another line slope, and this line will be this one, according to the question. Okay, so both the slopes will be same. This line slope and tangent slope will be same. And using this equality, using this condition, you can find the point of contact as well. Okay, so I think here, just write the question here, the tangent parallel to 4x minus 2y plus 3 equals to 0. So I think if you want to get the slope of this line, then I think it is need to be converted to the slope intercept form as well. So twice y equals to 4x plus 3, that is y equals to, so is the tangent equation. Now similarly, just you can find the normal equation as well. Okay, only this I think this tangent line is parallel to this line. Okay, so I think this line slope is this one. So I think this tangent slope is equals to this slope, because this tangent and this line are parallel, according to the question that you can see, parallel to this line. So if the two lines are parallel, then what? Two slopes will be equal. Okay, so this slope and this slope will be equal. So according to the question, just write this part. So 5 by twice y1 plus 4 equals to 2. That means 5 equals to 4y1 plus 8. 4y1 plus 8. So 4y1 minus 3. y1 equals to minus 3 by 4. y1 equals to minus 3 by 4. Okay. So if the y1 is minus 3 by 4, then how can I find the value of x1 here? Since point of contact, this x1 comma y1, since x1 comma y1 lies on curve के ऊपर lie करता है, ये हम लोग जानते हैं.
सो y कार्ब का इक्वेशन क्या था, y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 3. सो y1 प्लस 2 होल स्क्वायर 5x1 minus 3. That means y1 plus 2 minus 3 by 4 plus 2 whole square equals to 5 into x1. x1 तो निकालेंगे हम लोग, x1 minus 3. तो यहां से अगर मैं x1 का वैल्यू निकालूं, ओके, जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ x1. ओके, सो this minus 3 plus 8 by 4 whole square equals to 5x1 minus 3. That means 25 by 16 plus 3 equals to 5x1. That means 25 plus 16 by 16. Sorry, it will be, देखो हो गया ना, यहाँ पर हो जाता है बीच बीच में ऐसा, 5x1. ओके, हो गया. फिर 48 और 25, 5 and 13, 1, 6, 7, 16 equals to 5x1. That means x1 equals to 73 by 80. So point of contact आपका निकल गया. So point of contact 73 by 80, minus 3 by 4. Minus 3 by 4. Okay? Minus 3 by 4. So point of contact निकल गया. Now it's time to find the equation of the tangent. Equation of tangent. Y minus y1 minus 3 by 4. फिर dy by dx. dy by dx का वैल्यू क्या निकला था? dy by dx का वैल्यू, dy by dx का वैल्यू 5 by y plus 2. ठीक है, और x minus x1 that is 73 by 80. So y minus y plus 3 by 4, और इसमें ये जो है इसमें तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट बिठाएंगे हम लोग 73 by 80 और minus 3 by 4. That means 5 by minus 3 by 4 plus 2. That means ये स्लोप तो इसके साथ भी इक्वल है. That means 2 के साथ इक्वल है कि नहीं? 2 के साथ इक्वल है 2x minus 73 by 80, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप इसके साथ, इस लाइन का स्लोप के साथ इक्वल नहीं है. हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था वहां से, तो 2 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? सो यहां से मल्टीप्लाई कर लो y plus 3 by 4 और इधर twice x minus 73 by 40. So twice x minus y minus 73 by 40 minus 3 by 4 equals to 0. Twice x minus y minus 40, 73 plus is 0. Twice x minus y minus 103 by 40 equals to 0. It is the equation of the tangent. Equation of the tangent. Okay, you can verify the solutions also, calculation part also. Okay, so equation of the tangent just like that. Similarly, if the tangent line is perpendicular to another line, then how can you find the equation of the tangent here? Just see, it will be the next question. Okay, it is a parallel formation, and the next question is going to be the perpendicular formations. Find the equation of the tangent. 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 Equation of the tangent to the curve. To the curve y equals to x cube plus twice x plus 6, which is perpendicular to
x plus 14y plus 4 equals to 0. X plus 14y plus 4 equals to 0. That means in the last question, I think the parallel condition was there, but in this question the perpendicularity condition is there. Okay, question pattern, solution pattern will be same. Okay, but this perpendicularity property should be used here. Okay, given curve C, given y equals to x cube plus twice x plus 6, dy by dx equals to 3x square plus 2. So let point of contact dy by dx x1 comma y1 3x1 square plus 2, 3x1 square plus 2. So it is a point of contact. Okay, since tangent perpendicular to x plus 14y plus 4 equals to 0. So slope of tangent, टेंजेंट का जो स्लोप है इनटू स्लोप ऑफ x plus 14y plus 4 equals to -1. If two lines are perpendicular, then what? The slopes multiplication will be -1. Slopes multiplication will be -1. The slope of tangent means this one, 3x1 square plus 2 equals to, not equals to, into slope of this, that means -1 by 14, I think. So just you can verify. 14y equals to -x minus 4. Okay, so y equals to -1 by 14x minus 4 by 14. Okay, so -1 by 14 equals to -1. So So 3x1 square equals to 14. Minus minus तो cancel हो गया. That means 3x1 square 14 minus 2. That means 3x1 square 12. x1 square 4. x1 equals to plus minus 4. Okay. So that means x1 equals to plus 4 and minus 4. Okay. So लिखो. Since the point of contact, अब y1 का वैल्यू निकालना है. Since x1 y1 lies on the curve, कर्व के ऊपर लाई करता है. कौन सा कर्व है? y equals to x cube plus twice x plus 6. So y1 equals to x1 cube plus 2 x1 plus 6. Okay. So y1 अब plus 4 whole cube plus 2 into plus 4 plus 6. y1 64 plus 8 plus 6. y1 equals to 14 78. y1 equals to 78. Okay, and अब -4x का वैल्यू -4 जब हो तब y1 equals to -4 whole cube plus 2 into -4 plus 6. That means y1 equals to -64 minus 8 plus 6. That means y1 equals to 64 or 8 minus 72 or इधर 66 minus 66. तो यहाँ पर पॉइंट मिला आपको 4,78 और यहां पर पॉइंट मिला आपको -4, -66. So in these 2 points you need to find the equation of the tangent. Okay, so equation of tangent at 4,78. y minus y1
dy बाई डी एक्स क्या निकला था? dy बाई डी एक्स क्या निकला था? 3x स्क्वायर प्लस 2 4,78 x माइनस 4 दैट मीन्स y माइनस 78 और यहां पर 48 प्लस 2 50 x माइनस 4 तो बस यहाँ पे लिख लो 50x माइनस 200 इक्वल्स टू y माइनस 78 50x माइनस y माइनस 122 equals to 0. It is the tangent equation at this point. Sorry, at this point 4,78. So similarly, we can find the equation of the tangent at this point also. Okay, so just you can continue. So at ये लिख लो at minus 4, minus 66 बस बिठा दो y minus y1 और इधर 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 माइनस 66 x माइनस ऑफ माइनस 1. ठीक है, सो y प्लस 66 और इधर बात तो एक ही होगा 50 होगा x प्लस 4. दैट मीन्स 50x माइनस y प्लस 200 माइनस 66 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स 50x माइनस y प्लस 134 equals to 0. It is another tangent equation. So at the two different points, the tangent equations are different. Okay. So this type of questions are very important. Okay. Now, next question. Just write the next question. Find the equation of the tangent drawn to the curve. Find the equation of the tangent drawn to the curve. Find the equation of the tangent. Find the equation of the tangent drawn to the curve. Drawn to the curve y square 2x cube minus 4y plus 8 equals to 0 from the point. Okay, from the point 1, 2. That means suppose ये कर्व होता है, ये टेंजेंट है, तो ये एक टेंजेंट है. ये जो पॉइंट 1, 2 से एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है कर्व के ऊपर. ये कर्व का इक्वेशन तो ये है और टेंजेंट ये पॉइंट निकालना है. पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट गिवन नहीं है ये. दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. फ्रॉम मतलब इस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है. ठीक है, अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता तो एट होता, एट द पॉइंट 1, 2. जब एट होगा, एट इसके जगह अगर एट होगा तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा. अब फ्रॉम दैट मींस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है. ओके, सो गिवन कर्व y square minus 2x cube minus 4y plus 8 equals to 0. So it is our formality to find the dy by dx first. Twice y dy by dx minus 6x square minus 4 dy by dx equals to 0. So dy by dx twice y minus 4 equals to 6x square. That means dy by dx 6x square by twice 2 कॉमन ले लेते हैं y minus 2. That means 3x square by y minus 2. अब point of contact, let point of contact ले लेते हैं. Let point of contact x1, y1. So dy by dx का वैल्यू at the point of contact क्या होगा? 3x1 square by y1 minus 2. It is the slope of the tangent. Slope of the tangent. Again, अच्छा देखो तो यहां पर अगेन ये जो दो पॉइंट ज्वाइन करके भी तो टेंजेंट निकला है ना. ये दो पॉइंट टेंजेंट के ऊपर है, तो ये दो पॉइंट यूज करके भी तो हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं. सो अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट
m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये है टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप, ये भी टेंजेंट का स्लोप। सो 2 माइनस y1 1 माइनस x1 3x1 स्क्वायर बाई y1 माइनस 2। डायगोनल मल्टीप्लाई करो, डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस ऑफ y1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर माइनस सॉरी प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 3x1 क्यूब, ठीक है। हो गया, थोड़ा देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहां पर y1 माइनस 2 होल स्क्वायर करेंगे तो उधर ये माइनस को उधर लेके जाएंगे तो 3x1 क्यूब सामने आ जाएगा और माइनस 3x1 स्क्वायर, ऐसे। इसको इक्वेशन नंबर कुछ दे दो, उसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर देखो टारगेट तो हम लोगों का यहां पर x1 y1 का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो लिखो सिंस x1 y1 पॉइंट जो है वो तो कार्व के ऊपर भी लाई रखता है, लाइंग ऑन कार्व। सो y1 स्क्वायर 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो y1 स्क्वायर 4y1 प्लस 4 माइनस 2x1 क्यूब इक्वल्स टू 0। सो y1 माइनस 2 होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट y1 माइनस 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 2x1 क्यूब माइनस 4, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब ये भी y माइनस 2 होल स्क्वायर का वैल्यू है, ये भी y1 माइनस 2 होल स्क्वायर का वैल्यू है। सो दोनों फ्रॉम 2 and 3, अब 2 and 3 दोनों की इक्वल लिख सकते हैं। देखो तो 2x1 क्यूब माइनस 4, ये भी y1 माइनस 2 होल स्क्वायर का वैल्यू, ये भी y1, देखो, ठीक है ना। तो बस अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो यहां पर सब एक साथ लेके चले जाओ, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हो गया। अब ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, जीरो मेथड है कि नहीं। तो जीरो मेथड, x1 का ऐसा कुछ वैल्यू आपको चूज करना है जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन का आंसर जो है वो जीरो आ जाए, इसको बोला जाता है जीरो मेथड। जीरो मेथड, कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल हो आपके पास, क्यूबिक पोलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज करते हैं, जीरो मेथड से। ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोला जाता है उसको, ट्रायल एंड एरर मेथड। दैट मींस ट्रायल एंड एरर मेथड मींस व्हाट, I think you need to consider some values of x1 for which the value of this expression will be 0. Okay, so I think you can consider the values and how much the values will be there. Okay, just at first you need to check for the 4 values, 1 minus 1 2 and minus 2। ये 4 वैल्यू पहले पुट करके देख लो x1 का 0 आता है कि नहीं। अगर इसी में से कोई भी एक पुट करके 0 आ गया तो फाइन, वेरी गुड। अगर 0 नहीं आया तो हम लोग बाद में प्रोसीड करेंगे, +3 -3 में जाएंगे, +4 -4 में जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर x1 का वैल्यू हम लोग करते हैं क्या, लेट अच्छा x1 का वैल्यू -1 पुट करके देखो तो, -1 x1 का वैल्यू -1 पुट करके देखो, -1 पुट करके देखो, ये चाहिए हम लोग को, ठीक है। ये डिलीट मत करो, तो रफ में करो, x1 का वैल्यू -1 पुट करके देखो तो इसमें 0 आता है कि नहीं। -1 होल क्यूब -3 × -1 होल स्क्वायर +4। दैट मीन्स यहां पर ये होगा -1, ये -3 हो जाएगा +4, हाँ +3 -0। दैट मीन्स x1 का वैल्यू -1 पुट करने से इस एक्सप्रेशन का आंसर 0 आ रहा है। अगर x1 इक्वल्स टू -1 है तो फैक्टर क्या होगा, x1 + 1 इक्वल्स टू 0,
x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको अगर मैं फैक्टराइज करूं तो एक फैक्टर, 3 फैक्टर मिलेगा ना, क्यूबिक पोलिनोमियल है 3 फैक्टर मिलेगा। इसमें से एक फैक्टर x1 प्लस 1 है, बाकी 2 फैक्टर हम लोग को पता नहीं है, हम लोग निकालेंगे। ठीक है, एटलीस्ट एक फैक्टर तो पता हो गया। सो एक काम करते हैं, x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 4, इसका प्रोसेस 2 है। x1 प्लस 1 से इसको डिवाइड कर देते हैं, एल्जेब्रिक डिविजन प्रोसेस। सो द अदर 2 फैक्टर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दिस डिविजन प्रोसेस। और एक सिंपल प्रोसेस है, सिंपल थोड़ा टफ है बट शॉर्टकट है, एक लाइन में खत्म हो जाएगा। x1 क्यूब, अच्छा फैक्टर क्या चाहिए, x1 प्लस 1। देखो तो x1 क्यूब के बाद कौन सा टर्म लाने से x1 प्लस 1 फैक्टर आता है, मैंने x1 प्लस x1 होल स्क्वायर लिया है। अब दोनों से x1 होल स्क्वायर कॉमन लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, फैक्टर x1 प्लस 1 रहता है ना, ऐसे ही। तो दैट मीन्स यहाँ पर x1 होल स्क्वायर तो आपने ले लिया है। अब यहाँ पर माइनस 4x1 स्क्वायर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस 3x1 स्क्वायर था। यहाँ पर माइनस 4x1 प्लस 4x1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स यहाँ से x1 होल स्क्वायर x1 प्लस 1, यहाँ से माइनस 4x1 x1 प्लस 1 है कि नहीं। वहां पर 4 कॉमन लो, x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x1 प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 4x1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स x1 प्लस 1 और ये है, ये तो फॉर्मूला बन गया है भाई, x1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो दैट मीन्स x1 इक्वल्स टू माइनस 1 एक वैल्यू मिला और x1 इक्वल्स टू 2 दूसरा वैल्यू मिला। हो गया। अब y1 का वैल्यू निकाल लो। y1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सिंस x1, y1 lying on कर्व, दैट इज क्या मिलेगा, कर्व के ऊपर लाई करते हैं, y1 स्क्वायर माइनस 2x1 क्यूब माइनस 4y1 प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x1 का माइनस 1 बिठाओ, x1 का 2 बिठाओ, y1 का वैल्यू मिल जाएगा। सो इसको हम लोगों ने शायद शॉर्टकट कुछ लिख के रखा था, y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x1 क्यूब माइनस 4, ऐसा कुछ लिखा था ना। तो बस यहां से x1 का वैल्यू पुट कर दो, y1 माइनस 2 होल स्क्वायर 2 इंटू x1 होल क्यूब डिपेंड्स माइनस 1 माइनस 4। देखो यहाँ पर माइनस 1 x इक्वल्स टू माइनस 1, दैट मींस माइनस 1 होल क्यूब, दैट मींस माइनस 1 आ गया, माइनस 4 दैट इज माइनस 6। यहाँ पर होल स्क्वायर है तो दैट मींस ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता। दैट मींस यहाँ पर y देखो स्क्वायर उठाने से तो रूट माइनस 6 आ जाएगा ना, तो रूट माइनस 6 तो रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, तो हम लोग ये पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। अब दूसरा है x1 इक्वल्स टू 2, अगेन y1 माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 4, दैट मीन्स y1 माइनस 2 होल स्क्वायर 2 इंटू 2 क्यूब है, सॉरी 2 क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब, हाँ 2 क्यूब मीन्स 8, 16 माइनस 4, दैट मीन्स y1 माइनस 2 होल स्क्वायर 12, 2 रूट 3, दैट मीन्स y1 इक्वल्स टू 2 रूट 3 प्लस 2। बस। सो पॉइंट क्या मिला, पॉइंट आपको क्या मिला, 2 रूट 3 प्लस 2। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बस अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दो। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अब तो आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया, दैट मीन्स हो गया, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बस y माइनस y1 और ये है 3x1 स्क्वायर y1 माइनस 2, इसमें कौन सा पॉइंट बिठाना है आप, 2 रूट 3 प्लस 2 x माइनस x1 बस। सो y माइनस y1 बिटवीन 2 रूट 3 प्लस 2 और यहां पर 3x1 स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4 12 और y1 माइनस 2 दैट मीन्स 2 रूट 3 प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, अगर x माइनस x1 दैट मीन्स 2। बस अब तो डायगोनल मल्टीप्लाई कर दो, y माइनस
2 root 3 minus 2 equals to a to 6. ठीक है, तो यहाँ पर 6x minus 12 और इधर डायगोनली रूट 3 लेके चले जाओ. So that means root 3y minus 6 minus 2 root 3 equals to 6x minus 12. So that means 6x minus root 3y इधर minus 6 plus 2 root 3 equals to 0. ये है आपका टेंजेंट का इक्वेशन. कैलकुलेशन थोड़ा वेरीफाई कर लेना, ठीक है. So this type of questions are very important from the tangent and normal chapter, and I think one more lecture is required for completing this tangent and normal chapter. Okay, so in I think in that lecture just we will going to solve the very important and very impressive questions as well from the tangent and normal chapter. So just, and I think till this lecture, this means up to this lecture, just you need to solve this type of questions for the board standard. Okay, these are all board standard questions, and I think the question will be common and the types will be common. No types is actually are being skipped here. Everything and every type are being solved in my lecture. So I think from different books, R.D. Sharma, and you can see these are all R.D. Sharma books questions, NCERT books questions. All the questions are being provided to my students as well. So if you like my videos, if you like my lectures, then please subscribe, like and share my channel. Okay, thank you very much for joining my classes. Bye and Jai Hind.